Good evening, students. In previous video, we have completed the sixth chapter completely, and we have discussed all the features of algae, reproduction, types, classifications, all the things we have discussed very clearly. Okay, after that, we have to start a new chapter. Okay, so the new chapter is our animal kingdom. We know that there is a several types of animals are found in our world, because we know that according to biology there is a different types of flora and fauna. Okay, there is a different types of plants and animals also, so the number of plants is also very more and number of animals is also very more. Due to the diverse nature of animals, they are classified on the basis of their habit, their habitat, their cells structures and so many things. Okay, so बहुत सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है उनके हैबिट के हिसाब से, उनके हैबिटेट के हिसाब से, उनके सेल ऑर्गन्स के हिसाब से, उनके बॉडी डिजाइंस के हिसाब से. सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर्स ऑफ देयर हैबिट एंड हैबिटेट वी विल डिस्कस so many animals category and so many animals classification in this chapter. So today we are going to start a new chapter of animal kingdom, and before starting this chapter I am telling you animal kingdom is a so large classification because in your book it is given in a very detailed manner. So I request you to all please pay 100% attention in this class. Okay, so first we are going to discuss that which types of characters are generally used and which types of special characters are generally classified for the animals classification. So before starting special features of animals we are going to discuss. The first one is we know that some of the organisms are considered as unicellular organism. Why? Because their cell body is totally made up of single cells. But coming to the next animal's body and human beings and whether it is dog, elephant and many more things, the animals are multicellular organism. Multicellular organism means their body is composed of so many types of cells, maybe millions and trillions of cells are called multicellular and eukaryotic organism. In last video we have discussed so many things about the prokaryotics and eukaryotics. ओके हमने यूकैरियोटिक्स में देखा कि ये यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर द प्री डेवलप्ड पार्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक्स, यानी प्रोकैरियोटिक से ही निकलकर यूकैरियोटिक्स पार्ट्स आते थे और दे आर जनरली मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म कंपैरिजन देन प्रोकैरियोटिक. ये प्रोकैरियोटिक से काफी एडवांस्ड होते थे एंड देयर सेल्स इज जनरली कंटेन ऑफ मल्टी सेलुलर फॉर्म. इनमें जो सेल्स का जो फॉर्मेशंस होते थे वो मल्टी सेलुलर फॉर्म्स में पाए जाते थे. दैट्स व्हाई द एनिमल्स the first property is called as they are multicellular and eukaryotic organisms. Okay, इसलिए जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है किसी भी एनिमल्स की वो मल्टीसेलुलर है, साथ में उसकी यूकैरियोटिक प्रॉपर्टी भी. ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. नाउ कमिंग टू द मोस्ट पॉइंट, we have to discuss that they are heterotrophs. Heterotrophs means we are know that in our nature there is the two things. First, producers, and second is consumers, and third is decomposers. Okay, so we know that plants is the producers. Why? Because plant produce lots of things in our environment to utilize and fulfill the requirement of human beings as well as animals also. So plants are called the producers. जो plants हैं वो human beings के लिए, animals के लिए बहुत सारी चीज़ों को provide करते हैं, इसलिए जो plants हैं वो producers कहलाते हैं. Producers means something they are producing, जिस चीज़ों को produce कर रहे हैं, whether it is leaves, fruits, flower, बहुत सारी चीज़ों को they are called producers and we are the consumers. Why? Because we are consuming the things which coming from the plants. जो plant से निकल कर आ रहा है हम उसको consume कर रहे हैं. So we are the consumers. हम consumers हैं, animals consumers हैं. ठीक है, after that when we will die, जब हम खत्म हो जाएंगे, डेफिनेटली द बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे हमारे बॉडी को डिकम्पोज करेंगे. दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजर्स. सो तीन प्रकार के नेचर्स में फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं. पहले होते हैं प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स के बाद आते हैं इनको खाने वाले कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के बाद आते हैं इनको खाने वाले डिकम्पोजर्स. ओके, ये लाइफ साइकिल थ्रू आउट चलते रहती है. दैट इज कॉल्ड द ट्रॉफिक लेवल. ये ट्रॉफिक लेवल में भी पढ़ेंगे हम लोग जब ये एग्जाम में आएगा. ठीक है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, the great features of human beings is generally heterotrophs. What is the meaning of heterotrophs? Heterotrophs means they are unable to prepare their own food by own self. ये अपना खाना खुद बनाने में सक्षम होते हैं. That's why they are totally dependent on plants.
इसलिए ये पूरी तरीके से प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं. सो दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स. व्हाई? बिकॉज दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स प्रोडक्ट. ये प्लांट प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं, इसलिए हम इन्हें प्रोड्यूसर्स कहते हैं. और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कंज्यूमर्स होते हैं. ठीक है, कंज्यूमर्स में ह्यूमन बींग्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, एंड सो मेनी फीचर्स आर जनरली कमिंग इन दिस process. Okay, so in next we have to discuss that they are cell wall less eukaryotic organism. When we study the difference between plant cell and animal cell, there is a great difference between come to next point is cell wall. Okay, so cell wall is present in plant cell, but same cell wall is absent in animal cells. Okay, so most important features we are when we study the plant cell and animal cell, that time we have to study that the difference between is most important in plant and animals is cell wall. Why? Because cell wall is the protecting covering and it is generally less means nahi hota kisme eukaryotic organisms. Okay, so most important you have to take a special look of cell wall because it is a very less and present in eukaryotic organism क्योंकि इसकी जो होती है वो generally less ही होता है. It means ना के बराबर. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट देयर सेल वॉल इज अ यूकैरियोटिक यानी लेस होता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट सो मेनी टाइम्स वी हैव स्टडीड दैट दे एग्जिबिट holozoic nutrition. Some of the organisms are totally dependent to eat their mode of nutrition in a holozoic. So what is the meaning of holozoic? So many times I have told you that, so you have to find the meaning of holozoic and send me in my personal WhatsApp. Okay, so many times I have given you, so many times I have make you understand. Okay, so what is the meaning of holozoic? After that they have well developed sensory organs. Sensory organs means जो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ये किसी भी चीज को सेंस करने में ज्यादा पावरफुल होते हैं, यानी किसी भी चीज को इजीली ये सेंस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. एंड present of nervous system and means nervous system. So the human beings as well as animals also they have well developed features of sensory and nervous system to receive stimuli. Receive stimuli का मतलब होता है when you touch to any human beings and when you touch to any animals, that time these animals or human beings suddenly react to that stimuli. आप जब भी किसी जानवर को छुओगे, इंसान को छुओगे, वो suddenly कुछ ना कुछ react करेगा. That is only done by the action of sensory organs and nervous system because इसका जो message है वो directly आपके CNS के through पहुंचता है. That time the human beings and animals also react to that features. So अगर मैं ह्यूमन बींग्स और इंसान की बात करता हूँ या किसी भी जानवर की बात करता हूँ तो इनमें सेंसरी ऑर्गन्स और नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड फॉर्म में होते हैं क्योंकि ये किसी भी चीजों को महसूस करने में वेल डेवलप्ड होते हैं. ओके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एनिमल किंगडम. नाउ coming to the next point, they bear specific excretory organs. Some of the animals possess and some of the human beings, most important, several types. We know that there is a nature in our world, so there is a lots of very minutely insects, very minutely we can say that virus, bacteria, because they are living but they are also considered as non-living features. But some of the organisms, whether it is very small form and they don't have proper excretory system, but we know that excretory system is a well and important features which are included in the human beings as well as in the animals also. Why? Because when we take food, when the food is totally digested, that undigested food is also creates several types of problems. So that time that food, undigested food, is generally emitted out from the body by the help of excretory organs. So excretory organs is generally present in animal kingdom. So excretory organs जो है वो animal kingdom से बहुत important part और role play करते हैं. Okay, without excretory organs there is a lots of problems in the human beings. अगर excretory organ है proper function नहीं करता है, so there is a lots of problem created in the human beings as well as animals also. Why? Because excretory organ is a special type of organs which can emit the dust part, which can emit the most important fecal matter from our body and discharge through the outside environment, जो किसी भी environment से बाहर निकालती है. ठीक है, that is the main role of excretory organ and generally these types of excretory organs are present in animals. Okay, ये animals में होते हैं. Now next, they store glycogen as a storage
food materials. We know that what is the meaning of glycogen, because in several types in plants we have discussed that the plants generally store their food in the form of cellulose, in the form of starch, in the form of lipids. So many types they store their food material. So in human beings the storage of food is generally done by the use of glycogen. So human beings में जो food का storage होता है वो glycogen की वजह से होता है. So that is the most important feature generally done by the human beings, okay, and animals also. Now next, coming to the next important point, growth occurs at a time in, growth जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि एनिमल्स में ग्रोथ इज अ कंपलसरी एंड नेसेसरी फैक्टर. ये होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम में इन ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी, और ये लगभग पूरे बॉडी के पार्ट्स में ग्रोथ देखने को मिलता है. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एनिमल किंगडम. Okay, now next, coming to the most important, power of mobility or locomotion. What is the meaning of mobility? Mobility or locomotion both are same. It means that any human beings, if they have proper leg and proper their feeding material, they generally used to locomote from one place to another for the purpose of feeding, for the purpose of reproduction, for the purpose of their personal uses, for the purpose of their make their own world in a beautiful manner. For so ऐसे लोकोमोशन या मोबिलिटी का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो ह्यूमन बींग्स है, लोकोमोशन का यूज जनरली फीडिंग के लिए करते हैं. ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट करके अपनी जनसंख्या को एक्सपोज करते हैं. सो बहुत सारे फीचर्स जो है वो जनरली लोकोमोशन के कारण होता है. सो मोस्टली मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जनरली यूज टू लोकोमोट फॉर देयर एक्सपोजिंग देयर ओन जनरेशन ऑल्सो. ठीक है, जैसे हम लोग एंसेस्टर वगैरह भी पढ़ते हैं, जो अफ्रीका से एंसेस्टर शिफ्ट होते गए और वो जहां जहां शिफ्ट हुए उनकी प्रजाति वहां पे डेवलप होते गई और आज वही एंसेस्टर काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ एनिमल किंगडम. इन नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू डिस्कस दैट हाउ द एनिमल्स आर जनरली divided on the basis of their eating habitats. Okay, why? Because this is also a very important factor which comes in the exam purpose also, because most of the 11th and 12th class students, there is also a very lack of concept in their mind, because most of the students are generally unaware about that terms, and most of the students get confused when someone asks that what is the meaning of omnivorous. That time they unable to give the answer of omnivorous. So you have to focus everything here a very concentrations. So first point is that we are going to discuss animals are divided on the basis of their habit. The first habit we are going to discuss the herbivorous. Okay, what is the meaning of herbivorous? Generally those types of animals which are generally dependent to eat a grass and vegetable products are called herbivorous animals. एग्जाम्पल की बात करते हैं तो काऊ या फिर गॉट, और भी बहुत सारे होते हैं. ठीक है, सो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू दोज एनिमल्स व्हिच आर जनरली अडॉप्टेड are generally required to eat grass and vegetables and plants material are called herbivorous animals. Coming to the next point, this is the carnivorous animals. Carnivorous animals means those animals which are totally dependent to eat flesh of other animals. जो दूसरे animals के flesh के लिए dependent होते हैं, they are called as most important carnivorous. Okay, now third and most important point, what is the meaning of omnivorous? So those animals which are generally dependent and they are very capable to eat carnivorous and herbivorous. जो कार्निवोरस को भी फ्लैश भी खा सकते हैं और जो हर्बीवोरस को यानी काउ गॉट वगैरह सब जो ग्रास खाते हैं ये उनको भी खाने वाले ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज ओमनिवोरस. इसको हम ओमनिवोरस के नाम से जानते हैं. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल फीचर्स. हर्बीवोरस जो जनरली काउ या गॉट होते हैं वो ग्रासेस को खाते हैं. कार्निवोरस जो फ्लैश ईटिंग होते हैं, एग्जांपल की बात करते हैं लॉयन एंड टाइगर. ओमनिवोरस जो दोनों खाते हैं, ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं मैन एंड बियर ऑल्सो. ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स और भी हैं जो फ्लैश भी खाते हैं और ग्रासेस वगैरह भी खाते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज sanguivorous. Okay, so I am requesting you, all of you, please pay more attention about the classification of habit. Why? Because most of the time this type of classification comes in the exam purpose also, and most of the time that type of questions may be asked by the external in your practical exams also. Okay, so next important we are going to discuss that
आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, ये बहुत ही छोटे क्लासेस से हम जनरली पढ़ते आते हैं। कार्निवोरस क्या है, हर्बीवोरस क्या है, ओमनीवोरस क्या है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है। सो यू हैव टू क्लियर फ्रॉम दैट पोर्शंस आल्सो। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट सैंग्विवोरस। सैंग्विवोरस का मतलब होता है दोज एनिमल्स विच आर totally dependent to suck a blood from that portions of any other human beings or other animals are called sanguivorous। ऐसे organisms या ऐसे animals जो generally, ये बहुत ही छोटे से इंसेक्ट्स की भी बात करते हैं हम लोग, जो अपने खाने के लिए जनरली ब्लड सकिंग के ऊपर डिपेंड होते हैं। यानी इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द फ्लैश, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द ग्रास, सो दे आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द ब्लड। ब्लड के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जो कि किसी भी, जैसे हम लीच की बात करते हैं, बेड बग्स की बात करते हैं, जनरली दे सक द ब्लड फ्रॉम द एनिमल्स पार्ट एंड दे फुलफिल देयर ओन रिक्वायरमेंट, और ये अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ लीच एंड बेड बग्स। ठीक है, दो एग्जांपल्स है जो सैंग्विवोरस के कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। Okay, now after that we are going to discuss that what is the meaning of parasites. Parasites, in so many times we have studied that the parasite means those organisms which generally lives or feeds on the body of other organism, जो किसी बॉडी के ऊपर लगकर उनको फीड करते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं, या फिर अपने खाने के लिए दूसरे बॉडी का सपोर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म। पैरासाइटिक की बात करते हैं तो इनमें बहुत सारे आते हैं, जैसे एक हमारा टैपवॉर्म आता है। टैपवॉर्म इज अनदर फीचर्स ऑफ पैरासाइटिक एनिमल्स। ठीक है, पैरासाइटिक में आते हैं। So this is sanguivorous. I think it is a new term for you all. So parasitic आप लोगों ने पढ़ा है, omnivorous, carnivorous and herbivorous, और सारी चीजों आप लोगों ने पढ़ा है। Sporozoic, so many times I have told you that sporozoic means a special type of, special not all the types of मैक्सिमम स्पाइडर एंड हाउस फ्लाई। स्पाइडर की कैटेगरी में जितने भी आते हैं, हाउस फ्लाई की भी वैरायटी और फैमिलीज बहुत सारी होती है हाउस फ्लाई में। तो इनमें जितनी भी वैरायटीज आती हैं जनरली दे आर डिपेंडेंट ऑन द डेड मटेरियल्स। ठीक है, जितने भी डेड मटेरियल्स होते हैं जनरली व्हेन द बॉडी ऑफ एनी एनिमल्स, when the body of any human beings or when the body of any most of the small microorganisms are when die, that time these animals or these organisms are spider या house fly, generally they go and sit on the body positions. They generally secrete a special type of saliva or enzyme and they decompose their body part, and by the process of absorption they fulfill their own requirement. ये एक स्पेशल प्रकार का एंजाइम या सलाइवा से क्रिएट करते हैं, उनकी बॉडी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब करके इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ स्पोरोजोइक। ओके, नाउ एग्जांपल की बात करते हैं तो स्पाइडर है और हाउस फ्लाई है। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट पार्ट ऑफ हैबिट। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ हैबिटेट, हाउ द animals are generally divided on the basis of their habitat positions. Okay, the first one is we are going to discuss this coprophagus. Coprophagus, so many times we have discussed coprophagus की बात करते हैं, जैसे beetles होते हैं। ठीक है, beetles, so many times we have seen it is generally black in colors and so many times it is generally small red and black type of patches which is fitted in their body position. So mostly beetles are generally black in color and they feed their own food material by the fecal matters. What is the meaning of fecal matters? So those types of organisms which are totally dependent to take their food material by the fecal matter. fecal matter का मतलब होता है जो भी fecal matter discharge होते हैं, चाहे वो human body से discharge हो, चाहे वो किसी भी एनिमल्स की बॉडी से डिस्चार्ज हो, तो वो जो डग वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द फीकल मैटर। व्हेन इट एक्सक्रीटरी ऑर्गन से जो चीजें रिलीज होकर बाहर आती हैं उसी को हम फीकल मैटर कहते हैं। ठीक है, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है जो ह्यूमन बींग्स की बॉडी से, एनिमल्स की बॉडी से, जब वो बॉडी से एक्सक्रीटरी ऑर्गन के थ्रू बाहर निकलते हैं, दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड फीकल मैटर। तो ये जो एनिमल्स होते हैं जनरली बीटल्स की बात करते हैं, सो बीटल्स और भी बहुत सारे छोटे मोटे इंसेक्ट्स होते हैं, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द फीकल मैटर ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के फीकल मैटर को जनरली डिकम्पोज या खाने पीने का काम करते हैं। सो दैट इज द ऑल अबाउट 7 फैक्टर्स ऑफ हैबिट वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। सो at last I am giving you a homework. You have to
give me a detailed note on the habit of different types of classification of animals. आपको एनिमल्स में कितने प्रकार के हैबिट पाए जाते हैं इनके ईटिंग मोड पे आपको लिखना है. सपोज यहाँ मैंने हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, सैंग्विवोरस एंड पैरासाइट्स, स्पोरोजोइक, कॉप्रोफेगा. सो मेनी पॉइंट्स आई हैव डिस्कस हियर. और भी बहुत सारे फीचर्स होंगे जो इनके अलावा होंगे. सो यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम योर बुक and give me in my personal WhatsApp. Okay, so this is all about the introduction part of animal kingdom. In next video we will discuss some more features of habitat of classification of organism, and in this we will also discuss the classification of their body design, whether it is symmetrical, asymmetrical, radial. बहुत सारे इनके body designs हैं, ठीक है. So many types we have to discuss in next video. Till then, whatever I have taught you, you have to clear and you have to revise all the things. Okay, thank you, students.